यहाँ कम लाइट है क्या? हाँ यहाँ कम लाइट है। इसलिए ऐसा होता है। देखिए Yeah, congratulations. The kind of good work that you've been doing, be it cultural, be it social, be it entertainment, आपने हर फील्ड में बहुत सारा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है. आज आपको इंडियन अमेरिकन कल्चरल प्रमोशन के लिए यू बीइंग फेलिसिटेटेड ऑल्सो. What would you like to say? Appreciated by any kind of the association is always highly appreciated. Of course, I mean, this is a great honor. Thanks to Lord Mr. Ali Murarka and Picture and Craft that they selected me for this particular award. I sincerely say thank you so much, and I'll keep continuing my work the way I am doing it. Thanks a lot. अपने कल्चर को प्रमोट करना तो आई थिंक सो इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू द वन पर्टिकुलर कम्युनिटी सो आई लव टू वर्क फॉर द माय कम्युनिटी एंड फॉर व्हाट आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड टुडे आई विल कीप कंटिन्यूइंग डेफिनेटली फॉर दिस. There is this wonderful program that you're organizing in Delhi, which is on a very, very big level. Anything about that? Yeah, there's a 79 countries are participating in that, and not only from the Bollywood, Hollywood, all most of the top leaders of India as well as the delegates, business tycoon from all over the world are coming on 13, 14 and 15 January, Hyatt Regency at Delhi, NCR. Wishing that we should work something for this our community over there also. Absolutely. Thank you so much and wish you all the best. Great honor. Thank you so much. What is it? It's a culture promotion between India and America. How do you feel? How excited are you for the event? See, सबसे पहली बात ये कि ये इंटरनेशनल इवेंट जो है मुझे पहले भी उन्होंने एक डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सर ने मुझे एक ट्रॉफी प्रदान की थी ड्यूरिंग लॉकडाउन. Yes. तो सिमरन स्पेशली घर पे आई थी देने के लिए एंड आई वाज टोटली फ्लोर्ड. मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसके और आज इनका जो सम्मान किया जा रहा है और जो ये हमें सम्मान दे रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. बिकॉज हमें इन्होंने एम्बेसडर बना दिया है. इससे बड़ी क्या बात है. आज की शाम को लेके कितने अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ जी, अवार्ड कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो आज की शाम में? तो एक ही अवार्ड करेंगे. हाँ, एक ही अवार्ड. थैंक मुझे यू. कितने एक्सपेक्ट होंगे. मैं तो एक ही अवार्ड लेने आया क्योंकि मैं एक ही काम करता हूँ जिसका नाम है एक्टिंग. ठीक है ना. मुझे acting दे कोई दिया है. अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले समय में आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी हाँ. प्रोजेक्ट Yes. प्रोजेक्ट मेरे चलते रहते हैं. मेरा अभी जो लास्ट चल रहा था वो स्टार प्लस पे था, साथ निभाने और साथियाँ Yes. सीजन 2. और अभी मेरा चल रहा है एक और इसका नाम है पलकों की छाँव. तो आई एम प्लेइंग अभी तो हेड ऑफ द फैमिली प्ले करता हूँ. कहीं नानू कहीं दादू. तो वो कितना एंजॉय करते हो इस पीरियड को? See, I have been in the field for the past 45 years. हम लोग was the first serial we started with me and television started in India. तो तब से मेरा काम चल रहा है और अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं, वेब सीरीज ऐसे. थैंक यू सर. थैंक यू. तनिषा सर मॉन्टी सर एक साथ में. Stay there for a picture. Everyone here, man. राकेश जी और राजू जी दोनों आ जाओ एक साथ में. हाँ जी. साथ हिंदुस्तानी है. आ जाओ थोड़ा आगे. या कम. थैंक यू. Thank you.
हमेशा एक सोलो पिक्चर एक मिनट मैम यहाँ पे तनिषा जी आ जाओ आ जाओ Very rarely we see, something like this where American Indian amalgamation and conference of culture happens, and you being the ambassador now for it, what do you have to say? I think I'm very grateful to Matt Muraria for introducing me to this world of events in America and actually doing the whole, connecting American Indians with Indian celebrities and things like that, because at the end of the day, they feel so removed, but they are a part of our country and they do miss Bollywood. And when you go there, you realize how much they value the culture, how much they value, everything Indian, and you really feel appreciated more when you go there. Yes, of course, our Indian fans appreciate us, but they have such easy access to us, Of course, we are proud Indians, but when you travel to America, what is that one thing you really feel proud about the country? I think the most thing that I feel proud about when I'm there is how much our culture is appreciated and how much people associate Bollywood with the culture of India. Like there's a complete, a direct connect with Bollywood is no longer just a film industry. It's an integral part of the culture of India. And I think that's what I feel so proud of. The generations of my family that have been a part of it and the ongoing generations that bring out the whole, it's a part of India's culture now. It's not just Bollywood. तनिषा जी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ या फिर अपकमिंग टाइम की मैं बात करूँ, दृश्यम 2 इज़ डूइंग रियली वेल एंड सलाम वेंकी द ट्रेलर इज़ आउटस्टैंडिंग. फैमिली में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी अच्छे दिन है. आपके कोई प्रोजेक्ट के लिए चर्चा काफ़ी हो रही है. आपके सोशल मीडिया पे भी मैं देखते रहता हूँ कि यू पोस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स, बट व्हाट्स अपकमिंग फ्रॉम योर एंड? इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर लाइक? तो राइट नाउ मेरी बहन की पिक्चर सलाम वेंकी आ रही है on the 9th of December. So I want to tell everybody to please watch it because अभी आ रही है. 9th of December is the release of the film and it's a brilliant film. So please, it's a big deal. As far as I'm concerned, right now I'm very focused on the environment and anything I do in cinema, मैं believe करती हूँ कि मैं उस तरफ ही करूँगी जो मेरे beliefs. So I'm really focusing on the environment and my NGO Stamp Foundation. Tanisha ji, being a part of Big Boss, do you follow Big Boss because it is ongoing right now? I wish I followed it more closer. How much you have followed this year? This year I haven't actually followed it. You have seen any pictures, snap, videos? कुछ नहीं देखा है. I'm so sorry. Yeah, it's okay. And lastly, what do you want to say about your look? You're looking very beautiful today in the sari. Thank you so much. I think I really appreciate wearing the sari. It's like I said, it's the most graceful, most feminine garment. And I think chiffon saris just remind me of my mother. Thank you. Ready rolling? हाँ रोलिंग. Okay, जी. भारत और अमेरिका, of course, there's a lot of cultural exchange, especially entertainment की बात की जाए तो it's all over. Bharat Guraria ji and Anil Murata ji मिलकर ये, new dimension they've given to the movie. Yeah, I know. So what do you have to say? You're getting one today. भरत जी जो है, भरत गुराड़िया जी को कई साल से जानता हूँ. ये इन्होंने एक टॉर्च बेरर ऑफ इंडियंस एंड देयर टैलेंट इन US. और मुरारका साहब भी जो है, दोनों मिलकर बहुत सालों से एक इंडिया का जो झंडा है, टैलेंट का झंडा, अमेरिका में फहरा रहे हैं लगातार. और उसका हिस्सा मैं पहले भी बन चुका हूँ. कुछ करते रहते हैं ऑनर यहाँ के एक्टर्स को, तो उसमें मुझे पहले भी हमने ऑनर किया था. आई एम वेरी हैप्पी दैट आज ये अवार्ड फंक्शन है बिकॉज ही इज अ ओल्ड फ्रेंड. आई हैव टू बी हियर. Thank you. सर एक सोलो पिक्चर. राकेश सर. राकेश सर राइट में.
Simran, congratulations for being one of the ambassadors to promote India in America and in America and in India. You have been an epitome when it comes to promotions of cultural exchange. What do you have to say? It's truly a huge opportunity for us. In fact, this month of November 2022, I've just got back from Beverly Hills, where of course I represented my culture and performed Ras Garba for the very first time on stage, where we had all our artists from Bollywood. And it's been such an absolute honor for me to be as the cultural ambassador for several countries, including several countries in Europe, be it Paris, Zurich and the likes, and at the same time at Singapore and the United States of America, taking our culture across borders. This is very unique because it calls as the ambassadors, because artists have always played a very important role at any point of time, and especially at the point of challenges. During that time, it's always artists who truly come together and become one with the entire world. So today that we have this brilliant event of our India-American culture promotion by absolutely amazing V International USA, and our annual mission by Dr. Anil Murarkaji and Dr. Bharat Goradia from V International, along with Picture and Craft, that is Parul Chawla. All three of them have come together simply to call out for all the ambassadors and of course appreciate all the brilliant work done to spread the rich heritage and culture of our country India across borders and across the world. So it is truly an amazing occasion, and absolutely it feels on the top of the world because this is one of its kind and the very first extravaganza culture coming together. So thank you so much from the bottom of my heart to Apple Mission, V International USA and Picture and Craft for thinking me worthy of this. Absolutely my pleasure and my honor. Thank you so much. Thank you. Hi, Vivek. Hi, you're here for one of the ambassadors. Please tell us about your. Well, first of all, I'm grateful to be a part of this as the ambassador. Music being what I am today, and that's what I want to bring to the table. When we travel abroad, the kind of music that we've kind of grown up on, हमारा जो जिसे कहते हैं कि असली जो हमारी एक संस्कृति है, the Bollywood, golden era, some great classical, some classics, and वो मुझे लगता है कि when we take it to America, that's the root. These are the roots that we have of our culture. तो मुझे लगता है कि वो वहाँ ले जा करके I feel absolutely proud, and connecting with the people who've been living there for years together, and are absolutely so passionate about music. So I feel great connecting with them through my music. Okay. अच्छा, थोड़ा सा तानपुरे का वो ले लिया जाए तो मजा आ जाए। सर कॉपीराइट है। कॉपीराइट है? कुछ कॉपीराइट्स हैं? कॉपीराइट आता है ना? हाँ? म्यूजिक बजाओगे तो कॉपीराइट म्यूजिक नहीं है। नहीं, बट सी का मेरा अपना फिल्म का गाना तो गा सकते हैं, नहीं गा सकते? So a song which I sang for the film called Jazba for Irfan Khan and Aishwarya Rai Bachchan. A very, very great opportunity that I got from Arko Pravo Mukherjee. जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है, ओ जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। Thank you so much and congratulations. Thank you so much. Yes. Yes, sir, please.
Ready? Congratulations, you're here for Indian American Cultural Promotion Ambassadors. How does it feel? Didi? It feels fantastic to be here, and the Bharat Kirtiman Award we are very happy to be here to present that, and wish everyone and all the winners and all the awardees all the very best. Congrats तो हम भरत जी को बोलना चाहेंगे. भरत जी को भरत कीर्तिमान अवार्ड मिल रहा है. So we'd like to congratulate him, and he's been doing a lot of great work in America and Canada so far, and a lot of good promotional work for celebrities and films and everything. So we'd like to congratulate him, and we look forward to him receiving the award and giving the award today. So all the very best and congratulations, and we look forward to this evening. Thank you so much. Thank you. मैम यहाँ पे Mission का ये जो initiative है for you to be chosen as cultural ambassador, Indian American. What do you have to say? So I would like to congratulate the whole team of Apple Mission and Bharat ji for doing this, taking this initiative. It's a very good cause, and we really support this because Indian American cultural promotion is well needed by everybody, because different countries are growing in different direction, and I feel that this is a good platform for everybody to come forward and promote the culture, because Indian heritage is the most important thing to promote. Thank you. One's way. It is artists who bring the world together and become one. And especially when we take our rich culture and heritage across borders, it's extremely special. मुझे बेहद खुशी है कि this beautiful evening brought to us on behalf of the International United States of America and Apple Mission coming together along with Picture and Craft, just to allow all of us to be the true ambassadors and represent our country. India is known for spirituality, and our basic culture is very spiritual in nature. तो आइए हम इस खूबसूरत से शाम की शुरुआत करते हैं गणेश स्तुति से. बट इससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए for Dr. अनिल काशी मुरारका जी from Apple Mission, and हमारे The International United States of America से हैं Dr. भरत गोरारिया जी जो 5 दिन पहले अमेरिका से आए हैं. Humble thanks to both of you, and we all know and are extremely fond of. Ladies and gentlemen, maybe please give it up जिनका मिशन और विजन ही हो सिर्फ सेवा करना. साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप. Tanisha ji, this is especially for you. Really, thank you so much. Let's give it up for the very pretty Preeti Jangiani ji. Of course, we all love Bharat Goraria ji. वैसे he's always called a females person because सब कहते हैं कि आप हमेशा female stars को बुलाते हैं, लेकिन नहीं वो male stars को भी बुलाते हैं. परवीन दबाज जी, please आ जाएं sir stage पर. Thank you so much, and Bharat ji, हाँ, and of course recently हमारे grand marshals थे Abhimanyu Dasani and Bhagyashree ji. So Abhimanyu, it was such a pleasure. Everyone in California freaked out with your presence. वैसे बता दूँ इनकी फिल्म में मर्द को दिल नहीं लगता, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. For now, I'm going to request all my esteemed dignitaries to kindly join us here as we have Usma Saab. Of course, we'll have the pleasure of getting to hear from you. Ladies and gentlemen, let's have the pleasure of getting to hear from Usma Khan Saab. और सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिविंग. जी सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्टेज. एंड सिमरन जी ने इतनी तारीफ कर दी है कि मैं मतलब कुछ बता नहीं सकता हूँ.
क्योंकि ये खुद इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी, इतनी स्वीट हैं, और इनकी तारीफ करना एक ऐसा है कि दिए को चिराग जलाने की जैसे है। तो मैं सबसे पहले भरत गोड़ियाल जी का थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज भरत जी USA से आए हैं एक इस इवेंट के लिए, और आज इनको एक एक्चुअली ये किसी भी अवार्ड और सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आज इन्होंने लंदन में, अमेरिका में, USA में, हर जगह पे, स्विट्ज़रलैंड में, हर जगह पे इन्होंने अवार्ड सर्टिफिकेट से इनको सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहूँगा भरत जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि आज इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, भरत जी को ये इनका सम्मान किया जा रहा है। तो दीदी जो है ना इंदौर से आई हैं, तो मैं चाहूँगा कि दीदी भी 2 शब्द बोलें, जो हमारे लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ की सेक्रेटरी हैं। तो प्लीज़ दीदी जी आप कुछ बोलें। Thank you very much. A very good evening to one and all over here. Thank you, sir, for inviting us, and very congratulations for the Bharat Kirtiman Alankaran from World Book of Records and UDEX International. Thank you so much. Thank you so much, and of course, we'll now have the pleasure of getting to hear from you all. पहले अवार्ड कर लीजिए सर, फिर आप बात करेंगे। ओह माय गॉड, ओके। वैसे बड़े शौकीन हैं आप भी अवार्ड की, हमें पता नहीं था। 3 साल देश में बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर। क्या होता है ना, जब तक कुछ हाथ में नहीं आए तो बोलने का स्वाद नहीं है सर। तो पहले कुछ इनको बताइए, दिखाइए, तो फिर तभी कुछ गले से कुछ निकलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Is truly the moment, and of course the best moment for all of us, where we have the grand felicitation of Dr. Bharat Goradia ji from the United States of America as the very prestigious Bharat Kirtiman is bestowed on our very own Bharat Goradia ji. This is a huge honor, and we like to congratulate Book of Records, Usman Khan Sahab and Niti Bhallaji for doing the honors, along with our superstars Tanisha Mukherjee, Preeti Jhangiani ji, Parveen Babas and Abhimanyu Dasani. ओहो, मुस्कुरा तो देखो, क्या बात है। He's known for his magnificent smile, and Bharat ji, you're at loss of words, but please look straight into the cameras for this. Yeah, so Bobby is here to guide us. Bobby, और कौन से It is सबसे पहले तो all the dignitaries. I'm so very happy that today for a change, all these stars have come before my friend William come. So I'm so very thankful. It is one of the rare occasions I'm telling you, especially Bollywood is concerned. I think this is the first time ever that all this time, before time or in time.